Good evening, everyone. Am I audible to all? समस्त voice आसছে? Yes, sir. Okay. Good evening. Yeah, good evening. We start करिए just 1 minute. Okay. So हमको question number 61 हमें 60 जाए discussion करी 61 जो हमें discussion करी बात थी. Okay. So question number 6. Consider the statement with reference to the rates of division and tributary. तो कौन होगा हमारा आंसर आएगा? Comment section you can tell in the comments. Hi Manasmita. Okay. तो देखो फास्ट होची हमरो हमें डिस्कशन करिथिले जे फंडामेंटल राइट वायोलेशन होची then you can directly go to Supreme Court on Article 32 or High Court 226 रे तमे जाई परिबो. तो तांका पाखरे डिफरेंट रीड्स अछि जेमति कि हमें कहले प्रथमे मांडामास रहिला. ओके देन हमरो प्रोहिबिशन स्टैट्यूटरी क्वारेंटो. ओके हाबिबस कार्पस रहिला. तो हमर जो रीड्स हमर इश्यू करा जाय. तो प्रथमे ए दीडा को ऊपर पचारिछि रीड्स ऑफ प्रोहिबिशन एंड स्टैट्यूटरी. प्रोहिबिशन स्टैट्यूटरी ऊपर दे कैन इश्यूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ओनली. ओके ओनली पचारिछि. ए स्टेटमेंट कोन अछि ना भूल अछि काहे कि ना तमरा जो स्टैट्यूटरीटा हमरो एइथिरे कोन प्रोहिबिशन ने कोन करा जाय ना हायर कोर्ट जुडिशियरी हमरो लोअर जुडिशियरी को रीड्स इश्यू करे. प्रोहिबिशन माने एक्सेस जुरिडिक्शन हे जाय थाए प्रिवेंट तांकर एक्सेस जुरिडिक्शन को प्रिवेंट करिया पई दे हैव पुट द रेस्ट्रिक्शन. तेनु हमरो प्रोहिबिशन हमरो कोन दे प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट टू डू something which is beyond their judicial capacity. And statutory कोन statutory रे से माने why you have not done this one गोटे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहे एंड statutory रे हमरो अदरवाइज से केस हायर कोर्ट को ट्रांसफर करंदी. तो ए दीटा का केस रे हमरो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इश्यू करे. किंतु 1993 रे हमरो इवन इफ वाला जे statutory private individual against से करि परिबो. ओके they can be used to take preventive as well curative. ओके हमर पचारिछि तो आंसर हमर कोन हबो यस हमर एटा कोन होछि ना हमर जोटा कि जुडिशियल जोटा होछि प्रिवेंटिव हमर सिक्योरिटी प्रिवेंटिव as well as curative. किंतु हमरो जोटा प्रोहिबिशन टा ओनली प्रिवेंटिव पर्पस में यूज करा है जे. तो एटा केवल नॉट फॉर प्रोहिबिशन पाई. दे आर नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल. एटा हमरा ठीक अछि. द हायर कोर्ट हमरा
only our legislative body or private individual could available nahi. So let's see the explanation eithile amara kono na read prohibition joda rahuchi eta kiye issue kar higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction. Okay, eta rahuchi kono na prohibition ye prohibit karuchi higher court lower court ko to prevent the latter from exceeding its jurisdiction. एटा सिटुएशन कोन होची ना हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को कहूची आइदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विथ मैटर और टू लेटर टू इटसेल्फ माने लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट कहबो कि हमर केसटा ताको ट्रांसफर करिया पई अदरवाइज ये ताको डायरेक्शन दबा टू क्वाश द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट ओके तेनु एटा कोठी ना लैक ऑफ excess jurisdiction or lack of jurisdiction case रे हमरो issue है certiorari okay writ of prohibition can be issued only against judicial and quasi-judicial body. It is not applicable against administrative authority, legislative body or private individual. Previously, writ of certiorari issued only against judicial and quasi-judicial, not against administrative authority. Kintu 1991 Supreme Court कहला even if एटा हमरो administrative against administrative authority affecting the right of an individual एटा issue करि हबो तेनु जो दीडा का कंबाइन करके कहिछि certiorari case रे एटा हमरो administrative authority against रे apply करि हबो ओके जोठी हमें कहले prohibition हमरो कोन ना जनरली एटा होछि preventive in nature कौन पे प्रिंसिपल होछि जे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर किंतु हमर certiorari रा होछि कोन certiorari negative in sense that is used to quash an action but also certain affirmative action. So हमर certiorari होछि हमर preventive as well as curative. तो preventive and as well as curative only for हमर certiorari not for हमर prohibition टा only preventive यूज कर दे तो जो दीटा को कंबाइन करके कहिछि सेटमेंट रॉन्ग ओके both writ prohibition and certiorari are not available to against legislative body and private individual. तमरो एटा administrative body against body हबो certiorari टा जोटा 1991 में not legislative आउ जो हमरा private individual against हमरा हबन तो आंसर only 3 is the correct answer. Question number 62. Which one of the following provision of the Indian Constitution contain the provision related to cooperative society? A cooperative society हमारा कोथले मेंशन अछि पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 4 ए कोडा हमारा इथु ठीक अछि देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा कोठी मेंशन अछि कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन अछि हमारा आर्टिकल 19 रे ओके यू कैन माने फॉर्मेशन ऑफ द ओके हमें निजे गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन करि परिबो ओके एंड तमरा कोन होची तापरे हमरा आर्टिकल 43 जोडा कि हमरा कोन 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 आसीथिला 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 आसीथिला तो एटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोडा कि हमरा पार्ट 4 रे अछि सो पार्ट 3 रे अछि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 रे पार्ट 4 रे अछि जोटा कि आर्टिकल 43 बी रे अछि तेनु ए दीटा करे सो 1 2 हबा हमरा करेक्ट तो आंसर कोन हे जिवो ना ओनली ए हे जिवो हमरा करेक्ट आंसर ओके सो एनी डाउट कार किछि डाउट अछि ओके तो एथिरा में देखिबा जो 19 एटा हमर परीक्षा रे यूपीएससी रा क्वेश्चन पढिथिला प्रीलिम में जे हमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हमर केबे आउ एटा न्यूज रे वर्तमान अछि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे हमर 2011 रे जोडा कि हमर गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी तो जोडा कि हमर प्रथम तो एक रे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 रे अछि फंडामेंटल राइट रे सिमिलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो हमरो 43 बी इथरे भी अछि सो फर्स्ट 1 and 2 इज करेक्ट एंड आल्सो इटा हमरो पार्ट 9 बी रे अछि
जोटा कि आमे कहूचे कोऑपरेटिव सोसाइटी 243 ZH रु 243 ZT जाय हमरा अछि ओके तेणु अदर फंडामेंटल ड्यूटी रे एटा हमरा मेंशन नाही काहे कि ना एबे रिसेंटली सर्टन प्रोविजन ऑफ हमर 97 अमेंडमेंट एक्ट रा सर्टन प्रोविजन को इथु डिलीट करा जाय और रिपील करा जाय इति पई हमर एटा न्यूज रे अछि सुप्रीम कोर्ट quashed a part of the constitution inserted by 97 constitutional amendment act 2011 on cooperatives तो सेति पई न्यूज रे अछि यू कैन सेति पई एटा इंपोर्टेंट हे 63 with reference to directive principle of the state policy consider the following statement तो कौन हमरा a law implementing any the directive principle of state policy can declare void on the ground contravention of the fundamental right to the equality before law all the law giving effect to directive principle of state policy are placed in the 9th schedule are outside the preview of the judicial review कौन हवा हमरा आंसर आ सो नेक्स्ट टेस्ट हमरा होची ओडिशा ज्योग्राफी ओडिशा रा जेहेतु क्वेश्चन हमें ओडिशा ज्योग्राफी रा क्वेश्चन करबा जमती कि ओपीएससी स्टैंडर्ड रो ओके एंड करंट अफेयर्स भी रहइबो सेतिरे करंट अफेयर्स प्लस ओडिशा रा हमरा ज्योग्राफी क्वेश्चन हमरा रहइबो ओके तो एटा हमरा कोन हबो ना directive principle of state policy cannot declare void on the ground contravention of the fundamental right to equality before law okay na eta wrong achi then all the law jodi tamara 9 schedule le rakha jibo that is outside of the judicial review ei question tamar last year prelim re bi padithla jodi kote jinsa amara 9 schedule le rahi jauchi whether it can be subjected to judicial review or not jaha bi rahibo tamara माने जदि एटा गोटे अनकन्स्टिट्यूशनल तो डेफिनेटली जुडिशियल रिव्यू थ्रो एटा नल एंड भॉइड हे परिबो तेनु जोडा 9 शेड्यूल रहिला हमर सेटा जे हमर ताकू इम्यूनिटी मिली गला कि ताकू जुडिशियल रिव्यू अंडर आसीबनी सेया नहे तो एवरीथिंग जो इंक्लूडिंग 9 शेड्यूल जोडा रहिबो दैट आल्सो हमर कोन हमर सेटा 9 शेड्यूल जोडा भी रहबा हमर जुडिशियल रिव्यू संगे रहबा तो ए दुटा का आंसर हमर रॉन्ग अछि ओके नै हमें कहले 35 मॉक टेस्ट हबो ओके लास्ट टाइम हमें कहले एथरा 35 मॉक टेस्ट हबो एंड मेनी क्वेश्चन जोडा की रिलेटेड एबे जेमिति तमे क्वेश्चन पढुची स्टैटिक को खाली नुहे स्टैटिक को बेस करी कि जोडा जेमिति कि हमें कहले वर्तमान सपोज 106 अमेंडमेंट एक्ट ऊपर पड़िला और तमरा जोडा न्यूज रे अछि इलेक्शन 1 और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो मेजर जोडा रहिबा हमरा करंट रिलेटेड टॉपिक को स्टैटिक को कांसेप्ट को बेस करके करंट रिलेटेड टॉपिक हमरा पढिबो ओके स्टैटिक तो जोडा हमें कवर करछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोडा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट जोडा कवर होची ताकू कवर करबा प्लस तो जोडा हमरा न्यूज रे कवर करबा सो दैट कि हमरा कोन हबो ना जेहेतु तमे जो माने मेन लेखिच इंटरव्यू पई तांकू भी हेल्प हबो एंड जो माने हमरो प्रीलिम ए वर्ष दबो यूपीएससी प्रीलिम जेहेतु गुंचिला तो आमे यूपीएससी प्रीलिम को भी टारगेटेड रखी के मॉक टेस्ट में करबा तो तेरो जो माने तमे माने यूपीएससी भी दउछ यू कैन आमे सेही लेवल का क्वेश्चन ए वर्ष करबा जेहेतु ओपीएससी यूपीएससी आउ तो किछि डिफरेंस सेमते नाही ओके so now coming to the 64 consider the following article 17 of the Indian it is the only absolute fundamental right present in the Indian constitution it defines untouchability as a social disability imposed on certain class of person by reason of their birth in certain caste the parliament has exclusive power to legislate against the practice of untouchabilities it is available against the action of the state as well as the private individual ता भितर कोडा ठीक अछि ओके देखो
एटा हो जबर ओडे फंडामेंटल राइट केत नंबर आर्टिकल अछि हमर अनटचेबिलिटी 17 आर्टिकल नंबर 17 जोटा कि राइट टू इक्वालिटी 14 रो 18 भितर हमर 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल इट्स फॉर्म तमे कोनोसी वे रे भी तमे काहाकू माने इवन इफ जदी तमे कहूछ जे अनटचेबिलिटीज बाय वर्ड्स ताकू इंसल्ट करूछ दैट इज आल्सो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हला बोली कुहा जबो ओके सो एटा हमर कोन होची एटा रॉन्ग अछि जे untouchabilities are the social disabilities imposed on certain class of a person by reason of their birth in certain caste. Okay. Parliament has exclusive power. Yes, Parliament has the exclusive power to practice untouchabilities by the law and to legislation law, and it is against the action of the state. Even if it ame kon कहले fundamental right जे जदी गवर्नमेंट किछि हमरा रूल्स रेगुलेशन नै के आसिला सेटा को जदि आमे अनकन्स्टिट्यूशनल कहबा अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट होची किंतु इवन इफ जन प्राइवेट इंडिविजुअल भी जदि अनटचेबिलिटीज प्रैक्टिस करूची तो ता अगेंस्ट भी एक्शन निया जिवो तमरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट रे आमे कहिसे जदि कोनोसी नेता भी जदि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करूची से डिस्क्वालिफाई हिजबो सो इट इज अवेलेबल it is the action should be taken against state as well as our private individual. So second statement of कोडा कोडा second statement रॉन्ग हला ये कहा जाउछि जे इट डिफाइन्स हमरो ए जोटा हमरो देछि जे हमरो अनटचेबिलिटी को हमरो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अनटचेबिलिटी को पूरा डिफाइन करा जाय जे को माने अनटचेबिलिटी एटा हमरो डिफाइन करा जाय नै किंतु अनटचेबिलिटीज वर्ड हमर लिखा है किंतु को माने अनटचेबिलिटीज रे आसीबे तो सेटा डिफाइन करा जाय ओके तो डिफाइन अनटचेबिलिटी एज ए सोशल इट इज इम्पोज्ड तो एमिति डेफिनेशन हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे नै ओके एइथरे खाली कुहा दैछि जे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज एंड प्रोहिबिट और फॉरबिड प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म सेटिक हमरा लिखा है सो अनटचेबिलिटीज is a punishable offense in accordance with the law. It refers to the social disabilities imposed certain class by person by reason of their birth in certain caste kintu eta mention nahi it is only absolute fundamental right in the constitution so that is illegal to practice untouchability in any form okay absolute माने कोन ना आ पई जेंति रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन थाए आ पई किछि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नै state cannot put reasonable restriction or माने certain cases जेंति कि हम कहले you can freely move throughout the territory of the country state हमर reasonable restriction लगै परछि जो उडा का हमर प्रोटेक्टेड एरिया और जो माने ट्राइब माने रहउ छथि हम जेंति कहथिला अंडमान निकोबार रो जो माने सेंटिनल रहउ छथि you cannot enter to their territory किंतु एई केस रे आ पई कोनोसी रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगै परिबो नै तो एटा ओटा एब्सोल्यूट सो अनटचेबिलिटी इज it has not defined either in the constitution सेति पई हमर ई रॉन्ग स्टेटमेंट हमें कहउछे जे प्रैक्टिकली हमें कहिले अनटचेबिलिटी को मानु कहउछे जो माने मे बी ओटे लोअर कास्ट रे हमें कहउछे किंतु कॉन्स्टिट्यूशन रे सेटा मेंशन नाही ओके कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट मेंशन दिस डेफिनेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी सेति पई से स्टेटमेंट हमर रॉन्ग अछि ओके तो अनटचेबिलिटी जे हमर कोन होची तमरा स्टेट अगेंस्ट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट भी एटा हमरा आसुची ओके पर गवर्नमेंट किछ एक्शन आनी परिबनी प्लस तमरा ना कोनोसी इंडिविजुअल लोक भी एटा प्रैक्टिस करि परिबो ना क्वेश्चन नंबर 65 consider the following statement with reference to article 323A and 323B. They empower both and state legislature to establish tribunal. Both articles provide for establishment of tribunal for public service matter only. So our answer कौन हबो ना neither हबो तार explanation हम directly देखिबा. So article 323A कौन और B कौन? Okay. First होची 323A. तो एटा कौन ना establishment of tribunal for public service matter only. And article 303B होची हमारा establishment of tribunal for certain other matter. तेणु हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट देइची
both article provide for establishment of public service matter only no आ भितरु एटा होछि कोन ना 23A ता होछि हमरा कहा पई ना public service matter पई आउ other matter पई होछि 323B so while tribunal under 323A can be established only by parliament tribunal under article 323B can be established both by parliament and state legislature तने से जो कहती दीटा का आर्टिकल बाय ओनली पार्लियामेंट करिवो सेटा रॉन्ग ओके तेनु आ भितरु पार्लियामेंट केवल करिवो कोडा ना 323 जोटा पब्लिक सर्विस पे आउ जोटा हमरो अदर सर्विस पे हमें कहले तो सेथिरे हमरो स्टेट लेजिस्लेचर आउ हमरो कोन ना पार्लियामेंट हमरो करि परिबो जो हमें कहि छे they empower data को both parliament and state legislature to establish tribunal no जदि एटा 323A रे अछि केवल पार्लियामेंट करि परिबो एंड जदि 323B रे अछि दिजन जा करि परिबो सो बी केस रे दिजन जा हमरा करि परिबो तेनु जो हमें कहिले दीटा को पय एटा रॉन्ग अछि linguistic minority whether it is a constitutional body or not linguistic minority ऑफलाइन ए दीटा टेस्ट जाईची ओके आहुरी 33 टा टेस्ट तेनु फर्स्ट जो मैंने टेस्ट दे ना यू कैन कम एंड जॉइन द ऑफलाइन टेस्ट एटा हमर हवा आंसर बोथ देखो एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी केते नंबर आर्टिकल रे हमर ए जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कथा लिखा है केते नंबर आर्टिकल नंबर केते कमेंट सेक्शन में को ओके तो एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पई जणे हमर कोन होची एवरी स्टेट हैव endeavor to provide adequate facilities in the instruction in the mother tongue at the primary stage of the education to the student belonging to linguistic minority yes our special officer for linguistic minority appointed by amara president it amara ote constitutional body and tar article number hochi kete correct समस्त ठीक अछि 350 बी ओके 350 बी होची amara linguistic ऑफिसर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ओके तो एटा हमरा तेनु प्रत्येक हमरो स्टेट से माने कोन करिवे एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करिवे मदर टंग इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन पहले ओडिया रे अप टू हमें पढुचे 10th क्लास रे ओडिया रे और 5th स्टैंडर्ड रे ओडिया रे पढुचे मदर टंग रे तो सेटा निहाती मैंडेटरी हमरा रहिबा दरकार तो ये आमर कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक सर्टेन स्पेशल डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जोटा कि हमें कौन कहला आर्टिकल 353 बी रे हमर कहला गला जने स्पेशल ऑफिसर हमर रहइबो ओके ए 350 रे कोन अछि 350 रे एवरी aggrieved person has the right to submit a representation for redress any grievance to a officer or authority of the union territory or state in any language used in the union or in the state as the case may be हमें हमें कहिबा जे हमें गोटे जाई कि गोटे एप्लीकेशन ता दबा बर्तन गोटे कलेक्टर से कलेक्टर कोठी भी ही थाउ से जदी ओडिया न जानी थिले भी ही शुड एक्सेप्ट इन ओडिया दे एप्लीकेशन सेहि पई तो तमे जो स्टेट रे आप माने जॉइन करूछ सेही स्टेट रो लैंग्वेज निहाती सिखिबा दरकार मैंडेटरी काहे कि कारण लोक माने से को भी लैंग्वेज रे इंग्लिश रे खाली देबे तो गारंटेड नै बहुत लोक दे डोंट नो द इंग्लिश तो से माने ओडिया रे लिखिबे तो जे लिंग्विस्टिक ऑफिसर थिबो ही बाउंड टू एक्सेप्ट द माने ग्रीवियंस लेटर फ्रॉम द पीपल इन द लोकल लैंग्वेज ओके तो सेटा हमर 350 रे जे किए भी जाई कि तमरा जहां भी प्रॉब्लम अछि ग्रीवियंस अछि यू कैन गिव द ग्रीवियंस टू द ऑफिसर इन द लोकल लैंग्वेज कोन सी भी तमरा जो लोकल लैंग्वेज तमे देई पारि So this means that a representation cannot be rejected on the ground that it is not the official language. तमे कहि परिबन जे एटा इंग्लिश की हिंदी रे नाही तमे ताकू रिजेक्ट करि परिबो नाही सेकंड केस कथा होची 350A रे कोन अछि ना एवरी स्टेट
and the local authority in the state provided adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of the education. हमर जेमति कि कहला हमें प्रथमे जतले पढुचे हमें ओडिया रे पढुचे ओके तो एटा भी हमरा कोन ना जो माने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप माने को सेमानकर मदर टंग रे हमें ताको पढेबो आ 330 350 बी रे कोन अछि ना एई जो गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हला ता पे स्पेशल ऑफिसर रहबा आ ताको अपॉइंटमेंट किए देबे ना प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देबे सो आर्टिकल 350 बी रे प्रेसिडेंट अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर for linguistic minority to investigate kono na to all the matter relating to the constitutional safeguard for linguistic minority and to report say report gote tiyari kari ki president ku debe president eta amara parliament re rakhibe discussion debate ପାଇଁ similarly tamara national commission for SC national commission for ST ओके तो एइथिरो ए जो माने मेंबर चेयरमैन से माने को अपॉइंटमेंट किए दियंती ना प्रेसिडेंट ओके तो नेशनल कमीशन फॉर एससी केते ना 338 रे अछि एटा केते ना 338 ए रे अछि ओबीसी हे गले एनसीबीसी जदी कहबा बैकवर्ड क्लास होछि केते ना 338 बी रे अछि ओके तेनु ए सबुर मेंबर चेयरमैन को आप जेहेतु ये तीनटा हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किए दियंती ना प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दियंती आ एमानकर काम कोन ना से पर्टिकुलर ग्रुप एनसी रो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट रो काम होला जे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी जो लोक माने अछंती सेमानकर जो कंडीशन को इन्वेस्टिगेशन करिवे सेमानकर डेवलपमेंट को एमाने इन्वेस्टिगेशन करिवे एंड गवर्नमेंट जदी हमरा एससी पाई किछि पॉलिसी फॉर्मुलेशन करूछि सेमानकर इनपुट रहइबो तो एमाने कोन करिवे जो तांकर कंडीशन इन्वेस्टिगेशन एवरीथिंग करी गोटे रिपोर्ट टे काहा देबे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट सेटा पार्लियामेंट रखिबे डिस्कशन और डिबेट पाई सिमिलरली एसटी नेशनल कमीशन फॉर एसटी सेथरे भी जो माने मेंबर और चेयरमैन रहिबे तो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और से माने भी से रिपोर्ट प्रेसिडेंट तो जेतक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहिला दे माने अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड आल्सो दे विल गिव द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट एटा हमर पार्लियामेंट रखिबे डिस्कशन डिबेट a question हमारा previous year रे पढ़ी थिला one of the implication of equality in the society is the absence of equality माने कोन equality माने होची absence of the privilege तमे rich हुआ कि poor हुआ ओके VIP हुआ कि common लोक हुआ so everyone is equal before law जोटा कि article 14 रे हमरा मेंशन अछि ओके so article हमरा 14 रे मेंशन अछि कोन equality before law and equality before law and equal protection of law and equal protection of law so हमर कोन होची ना लॉ अगर तेनु काहा को स्पेशल प्रिविलेज दोने हमें लालू प्रसाद यादव हेले भी जदी इवन इफ यू आर चीफ मिनिस्टर इफ यू हैव डन द मिस्टेक यू विल गो टू जेल ओके ओडे कॉमन लोक भी जदी सेम क्राइम करछि ताकू जदी भी 2 इयर्स जेल जदि तमे गोटे वीआईपी लोक होछ इफ यू हैव डन द सेम मिस्टेक विल पनिश अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड सेति पई काहा को स्पेशल प्रिविलेज हमें दोने इक्वालिटी बिफोर लॉ लॉ आगे समस्त समान एंड इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ आल्सो जोटा कि हमर कोन होची आर्टिकल 14 रे अछि तो इक्वालिटी माने कोन ना एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनीबॉडी ओके तो अनटचेबिलिटी इराडिकेशन एटा भी हमारा यूपीएससी रा प्रीलिम क्वेश्चन थिला एटा भी थिला नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपीएससी रा प्रीलिम क्वेश्चन थिला इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटीज केते 17 ओके तो हमारा 17 हला इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी सी हे जो 15 कोन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ ओके तो रेस तो एटा हला प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन discrimination okay so hola kono okay equal opportunity in case of public employment okay so public employment रे equal opportunity हमको दिया जिवो equal opportunity in public employment 18 कोन abolition of titles okay abolition of titles होछ हमरा 18
तेणु आमर अनटचेबिलिटी जेटा परीक्षा रे पड़ितला 2021 रो क्वेश्चन 69 कोडा नॉट प्रॉपर्ली मैच 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन and forced labor 24 prohibition of employment of the children in factories 26 freedom to manage religious affair 29 freedom for okay तो आंसर कौन हम ये समस्त आंसर ठीक अच्छी डी डी होची हमर रॉन्ग देखो 23 ता ठीक अच्छी ए दीटा का हमर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट 23 26 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर एटा हमर 23 नंबर रे ओके तो हमर फोर्स्ड लेबर हला ह्यूमन ट्रैफिकिंग हला ओके तो एडा का हमर प्रोहिबिट करा जाय छी प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री तमे जानि छ 14 वर्ष रु बिलो 14 इयर्स below 14 years you cannot employ a child in the hazardous environment or factory नहल नै तमे चाइल्ड लेबर रे फसी दिबो ओके तो आर्टिकल 14 होची चाइल्ड लेबर बैन ऑफ चाइल्ड लेबर जोटा कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री बिलो 14 इयर्स एज तापर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर एटा हमर राइट टू फ्रीडम जोटा अछि हमर 25 रु 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओके फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओके तो हमरो एडा 25 रु 28 अछि 25 रु 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो 26 नंबर होछि कोन ना फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर एई जोडा हमरो 29 रो सेटा एक्चुअली 30 रो ओके फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटी होछि एडा 30 नॉट 29 एडा होछि हमरो केते ना 30 रे रहि ताले 29 कोन ओके तो गोटे पर्टिकुलर जो तांकर कल्चर अच्छी तो तांकर लैंग्वेज अच्छी सेगुडा को प्रोटेक्शन करा जाय पर तो एडा होची तो माइनॉरिटी मानकर जो मानकर माइनॉरिटी रहिले से मानकर जो कल्चर हां तांकर जो कल्चर रहिला तांकर जो लैंग्वेज रहिला तो ताकू प्रोटेक्शन करा जाय परिबो तो दैट इज हमरा आर्टिकल नंबर 29 ओके किंतु से माने ओटे administration of educational institution करि परिबे to protect their language आ ओइडा एडा हमर होची 30 रे अछि ओके so question number 70 right against exploitation तो कोडा आइ भितरो right against exploitation अछि और तुमको भी आप रे ऑलरेडी अपलोड हेची एमती क्वेश्चन ता तळको हमरो आंसर जोडा कि तमे लास्ट टाइम बोलले कि हमरो क्वेश्चन तळे आंसर रहले भलो बोली सो दिस टाइम वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट क्वेश्चन आउ ता तळको आंसर देखो एइडा हमर अनटचेबिलिटी सॉरी हमर पचरा हेची कोन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमर कोडा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होती 23 26 गोटेला ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर आ गोटे चाइल्ड लेबर ए दीटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो से अनुसार हमर कोन हबो ना 23 होचे हमर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर एटा होची 23 अनटचेबिलिटी ला होची 17 एटा हमर कोन एक्सप्लॉयटेशन आसु एटा कोन राइट टू इक्वालिटी 14 रु 18 भीतर जो आसुची राइट टू इक्वालिटी ओके तेनु एटा हमर एक्सप्लॉयटेशन आसुनी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एटा नहे एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री एंड माइंस बिलो 14 इयर्स एटा हमर आर्टिकल नंबर 24 तो ए दीटा का 23 एंड 24 मु कोन कहली हमर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ओके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ओके तो हमर कोन हिजबो तो 1 and 4 ओनली हिजबो करेक्ट आंसर ओके बुझिलो ए क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर यूपीएससी रे भी पड़ी थिला तेनु प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन में कले यू कैन नो कि को भलिया क्वेश्चन तमरा पडुची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
Consider the following statement. Article 301 is related to right to property. Right to property is a statutory right but not a fundamental right. Article 300A was inserted in the Indian Constitution by 44 Amendment Act during period of the Congress. So कोड हमरा ठीक अछि. Two only. Okay. First ता होछ हमर wrong. A right to property हमर fundamental right कितना नंबर आर्टिकल ले थिला? Right to property जोड़े थिला. Article 31. very good. Article 31 रे थिला. Article 31 रे right to property थिला जोटा को abolish हमर कर दिया गला. Okay. Abolish करी कि एटा को गोटे केवल fundamental right रू गोटे legal right करा गला. Okay, statutory right और legal right बोली हमर एटा को करा गला. तो एटा OPSC रे भी पढ़ितला UPSC रे क्वेश्चन पढ़ितला मन रखिबो. राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल 31 रे थिला तो सेटू हटेई कि आमे एको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट रो हटेई कि ओनली लीगल राइट करा गला और फंडामेंटल राइट रो हटेई दिया गला कोठी के आनी के रखा गला ना 300A रे रखा गला अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट रे हमरो ऐड करा गला किंतु नॉट इन कांग्रेस गवर्नमेंट कहा समय रे लेड बाय जनता गवर्नमेंट led by Moraji Desai. Okay. तेणु ये जो क्वेश्चन पड़ीला देख ये सब ठीक अच्छे 44 अमेंडमेंट एक्ट रे थिला हमर 300A रे इंट्रोड्यूस हेतिला एवरीथिंग करेक्ट किंतु कांग्रेस गवर्नमेंट समय हेतिला एंड दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दा हमर कोन ना एडा यूपीएससी रो क्वेश्चन तेणु तुम जदि बीट बाय बीट न पढ़िबो यू विल नॉट माने कैप्चर करि परिबन जने लास्ट तो रीड बिटवीन लाइन भल से क्वेश्चन पढ़िबो नॉल जने हमर एटा को ठीक मारि के आसी जो हां 44 अमेंडमेंट तो ऐड हेतिला 300A रे हेतिला किंतु एटा रॉन्ग नॉट बाय कांग्रेस गवर्नमेंट एटा बाय जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई. ओके एंड एटा हमर ओडे लीगल राइट 300A रे हमर एटा ऐड करा जेता. नेक्स्ट कोटा केवल इंडियन सिटीजन मान को अवेलेबल अच्छी नॉट एलियंस. ओके ओके तो देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एटा हमर केवल इंडियन मान को अवेलेबल. ओके नॉट फॉरेनर मान को अवेलेबल नहीं गोटे फॉरेनर लोक आसिक जहाँ मन ताहा कहि परिबनी इंडिया अगेंस्ट. ओके इक्वालिटी बिफोर लॉ यस एटा बोथ इंडियन एंड फॉरेनर. तापरे राइट टू लाइफ एंड पर्सनालिटी एटा बोथ को अवेलेबल. ओके एंड एटा राइट टू माइनॉरिटी एटा केवल इंडियन मान को अवेलेबल. तेणु आमर हूँ जो रहिला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 एटा आर्टिकल 19 इक्वालिटी बिफोर लॉ होचे हमर कोन 14. ओके हमर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एला 21. ओके राइट ऑफ माइनॉरिटीज हमर हमें 29 भी कहि परिबा. तो एटा इंडियन मान को केवल ई फास्ट 1 आउट 3 हमर मान को अवेलेबल नॉट फॉरेनर मान को एटा हमर अवेलेबल. ओके सो 1 and 3 हिजबो. द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर ए क्वेश्चन तमरा दी थरा पडलानी लास्ट ईयर भी पढिथिला लास्ट टू लास्ट ईयर पढिथिला ओपीएससी रे दी तीन थरा पढिलानी यूपीएससी रे. कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कोड हमरा. ओके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी रे. ओके वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा चारि थरा पडलानी ओपीएससी रे दी थरा यूपीएससी रे दी थरा सेम क्वेश्चन रिपीट हिलची. तो मन रखिबो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे हमें कहिथिले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 रु 51 अच्छी पार्ट 4 रे अच्छी आयरलैंड रो में आनीचे. ओके कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कथा कहूची. ओके नॉन जस्टिसेबल
नॉन जस्टिसेबल तापर हमर कोन तमर एटा होची हमर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड इतले हमें लिखाइतला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे जो सेते बेले जो गवर्नर और गवर्नर जनरल माननकू जो इंस्ट्रक्शन दिया जाउतला बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट सेही इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पर हमर डीपीएसपी हिसाब रे यूज करा होची ना रुहि तमे जानि पछो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी जे गोटे स्टेट रो पॉलिसी को भलिया हबो त ताकू डिफरेंट डायरेक्शन दिया छै हां तमे जदी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करूछ जेमति कि हमें कहबा जे तमरो ओल्ड एज पेंशन तमे दउछ जोटा कि हमर वार्धक्य भत्ता हमें दउछे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे हमर एमजी नरेगा क्रिएट करा हैछि ओके तो सिमिलरली हमर कोन विलेज पंचायत पे हमर जेमति कहिले हमर 73rd 74 अमेंडमेंट तो दीज आर द डायरेक्शन गोटे विलेज पंचायत रहिबा दरकार हमर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहिबा दरकार तो सेथि पई हमें कोन करछे ना डिफरेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करिबा पई जेमति एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे एमजी नरेगा कले ओके और हमर मैटरनिटी रिलीफ पाई 26 वीक हमर पेड लीव हमर गवर्नमेंट दोची तो ए सब गुडा का कोन होची ना हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके तेनु तमे माने रखिबो कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट नॉट पोलिस स्टेट द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड एउडा हमर कोठी मेंशन अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आउट स्टेटमेंट पडुतला दीज आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री ए क्वेश्चन भी हमरा परीक्षा रे पड़ितला जे व्हिच इज फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ कंट्री द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री ओके नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74 हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टा कौन एस्टैब्लिश करिया चाहूँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी गांधीयन डेमोक्रेसी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें काली डिस्कशन करिथिले सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सोशल माने केमिति डेमोक्रेसी हमें कहले रिड्यूस इनइक्वालिटीज फ्री लीगल एड टू पुअर एटा सोशल डेमोक्रेसी रे आसुची समस्त को केमिति इक्वल देखा जिवो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें कहले इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन जोटा कि हमारा 39 रे अच्छा ओके तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन तो एटा हमरा कोन होची बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिशमेंट करूची ओके हमें कुह वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा 3-4 थर पढिलानी केवल माने 42nd अमेंडमेंट एक्ट को नेकी आ भितरु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे कोटा ऐड करा जेतला ओके वेरी गुड हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एटा केते नंबर आर्टिकल ओके 43A रे हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे गोटे हला हमारा कोन 43A रे पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री आ गोटे हला हमारा 39A कोन थिला को फ्री लीगल एड टू पुअर Free legal aid and equal आ कोन थिला equal justice. हां फ्री लीगल एड टू पुअर Free legal aid इक्वल and जस्टिस प्रोवाइड इक्वल आउ कोन थिला गोटे 48A कोन थिला 48A भी ऐड हितला व्हाट इज 48A हमें काली भी डिस्कशन करथिले एटा परीक्षा रे पढुची 48A कोन के कहबो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वेरी गुड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वेरी गुड एटा थिला प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एटा भी हमरो आउ कोन थिला
आउ गोटे थिला चारिटा आड हेतला कोनडा 43 बी फॉरेस्ट हां 43 बी कोऑपरेटिव सोसाइटी ना ना हेडा नो 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 43 बी होची हमर 97 अमेंडमेंट एक्ट बे पढ़ी के असले बा ऊपर भूली जाओ सब ओके आउ गोटे थिला कोन इनइक्वालिटी आउ गोटे कोन थिला तीनटा हला हमर गोटे हला मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री फ्री लीगल एड टू पुअर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट आउ गोटे कोन थिला चारिटा थिला हां हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन यस हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन इंप्रूव द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन जोटा कि 38 रे अछि तो सेटा हमर कोन होची ए चारिटा एक्ट हमर 42 अमेंडमेंट एक्ट रे आडे ओके तो आंसर एटा हमर होई जबो कोन हमर ना B is the correct answer. Next question को consider the following statement regarding directive principles of state policy. These principles spell out the socio-economic democracy in the country. ठीक अच्छी ना भूल अच्छी ठीक अच्छी आमे कहले जे डीपीएसपी टा इकोनॉमिक और सोशल democracy spread करछि ठीक अछि the provision contained in this principle are not enforceable by the court सेति पे हमें कहले these are non justiciable in nature these are not enforceable by the court of law सेति पई ए दीटा आक स्टेटमेंट हमर ठीक अछि ओके तो आंसर कोन हबो बोथ इज हमर करेक्ट आंसर हमरा आ भितर कोडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रे ऐड अछि prohibition of trafficking in human beings and forced labor ये सब गुडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोडा यूपीएससी रे पढितला से गुडा को भी हमें मॉक रे इंक्लूड करूचे सो दैट यू शुड नो द कांसेप्ट ओके prohibition of trafficking in human beings and forced labor prohibition of consumption except for the medicinal purpose of intoxicant drinks and other drugs which are injurious to health ता भितर कोडा ना ओनली टू कितना नंबर आर्टिकल एटा मते किए कहबो prohibition of liquor कितना नंबर आर्टिकल अछि ओके आर्टिकल नंबर 47 वेरी गुड ओके एक्सीलेंट सब माने अछि और कोन सब प्लांगर ओके 47 आर्टिकल नंबर अछि 47 prohibition of liquor and prohibition of human trafficking and forced labor एटा तो तमे जानछ फंडामेंटल राइट रे आर्टिकल नंबर 23 तेनु एटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रा ओके एटा 23 होछि तो ओनली 2 हे जबो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन हमारा आंसर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें कहले 25 रु 28 फ्रीडम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन फ्रीडम टू वेयर एंड कैरी कृपान बाय सिख स्टेट राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म राइट टू कन्वर्सन अच्छा राइट टू कन्वर्सन बाय रिलीजियस बॉडी एटा गोटे फंडामेंटल राइट रे आसुची कि तमे जानो को कहि परिबो जे तमे मो रिलीजन को नियो बोली किंतु तमे जानो को फोर्स करि परिबोनी टू कन्वर्ट टू योर रिलीजन चारिटा तमर भूल अछि ना नहीं चारिटा तमे एलिमिनेट कर दियो आंसर बाहर जीवो ओके तो कोन हबो नंबर 1 2 3 तो फ्रीडम ऑफ प्रोपागेशन यू कैन प्रोपागेट योर रिलीजन यू कैन जो माने सिख माने कृपान कोन जानिचो कौन कहला कृपान कौन सर क्रिश्चियन माने फिग माने जो यूज करंदी गोटे छोट टर्बान छोट छुरीटे से माने एई हमर कोन होंती ना अंटारे खसी थांदी से सेटा कृपान नामे कहछि ओके पगड़ी आ गोटे छोट छुरी भी से माने पाखर रंगी तांकर जो हमर तांकर रिलीजियस वेयर से माने करंती ओके स्टेट राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म एटा ठीक अछि चारिटा हमर भूल अछि तनु आंसर कोन हबो ना 1 2 3 एई क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम रा क्वेश्चन थिला 79 which one of the following is included in directive principle of state policy D equal pay for equal work for both men and women जोटा कि हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बोली हमें कहउचे 80 क्वेश्चन नंबर 80 कोडा हमरा कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोंडा
ओके तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आम कहले हमरा एटा अछि आम जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमरा कहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जोटा कि आर्टिकल नंबर 44 यूपीएससी रे भी लास्ट टाइम पढ़ी थिला एंड ओपीएससी रे भी दिथर पढ़ला यूनिफॉर्म सिविल कोड वेरी इंपोर्टेंट मन रखो आर्टिकल 44 एंड ए दिटा को नाही एटा एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल एटा हमरा केत नंबर आर्टिकल अछि 350 ओके हमें एबे पढ़िले 350 ए रे कोन अछि ना यू शुड प्रोवाइड opportunity to the student at the primary level ले तमे मदर टंग रे तांकू पाठ पढ़िया पे opportunity provide करिवो बट आउ 350 बी कोन एबे पढ़िले हमें ना गोटे जन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हमर रहिबे हमर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देबे ओके सो मदर टंग कथा हमर कोआ जाय छी तो एटा हमर कोन अछि ओके एटा हमर डीपीएसपी रे नाही ओके एटा हमरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे मेंशन नाही क्वेश्चन नंबर 81 मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट कहां हबो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो आउ आकू नै कि 8टा क्वेश्चन पड़ी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके 8टा क्वेश्चन यदि प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन देखिबो 8 क्वेश्चन केम फ्रॉम दिस तो हम आंसर सी executive remains responsible to the legislature what is the meaning of this executive remains responsible to the legislature meaning कौन एमिति पड़ी थिबो तमरा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे तमे कहिबो काउंसिलर मिनिस्टर रेस्पोंसिबल टू लोकसभा ओनली ओके आउट हमर स्टेटमेंट कोन एटा ही पड़ितला स्टेटमेंट काउंसिलर मिनिस्टर रेस्पोंसिबल टू ओके लोकसभा ओनली आर मीनिंग कोन ना जो पर्यंत दे हैव द मेजॉरिटी इन द लोकसभा दे विल बी इन द गवर्नमेंट द मोमेंट दे लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द लोकसभा दे will lose the government or no confidence motion will be passed against them then the government will be collapse or the government will be amara dissolve hejibo tenu eithire executive ko mane na councilor minister na legislature mane ko mane na lok sabha jo mane rahile so executive remain responsible to the legislature and tamara out statement pade councilor minister amara responsible to lok sabha okay or amara executive amara responsible to the lok sabha only okay हाँ फॉर देयर पॉलिसी तमे जेंति कहिबो इवन इफ जहां भी माने एक्शन नेबे काउंसिलर मिनिस्टर दे आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर एमपी माने को दे कैन आस्क द क्वेश्चन सप्लीमेंटरी क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन थोरे इवन इफ हमारा डिफरेंट कमिटी अछि पब्लिक अकाउंट कमिटी और हमारा एस्टिमेट कमिटी से थ्रू भी हमारा स्टेटमेंट को स्क्रूटिनाइज करा जाए सो एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर और आउट स्टेटमेंट पड़े काउंसिलर मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू द लोकसभा as long as they have the number in the Lok Sabha majority if they have the majority in the Lok Sabha they will be in the government the moment they will lose the majority in the Lok Sabha the government will automatically collapse the answer C is our correct answer welfare state माने कौन ए क्वेश्चन एबे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एउडा मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेलफेयर स्टेट माने कोन मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम नंबर तो वेलफेयर स्टेट माने हमें कोन होची ना केमेदी हमें मैक्सिमम लोकन को हमें कोन करबा बेनिफिट पहुंचेबा एबे हमर गवर्नमेंट हमर नै के विकसित भारत प्रोग्राम आर एम कोन विकसित भारत प्रोग्राम रो एम कोन गवर्नमेंट एबे हमरो एटा मोर जो प्रोपागेट करूची विकसित भारत रो माने एम कोन एनीवन नो कोन तार एम होची 100% गवर्नमेंट बेनिफिट 100% गवर्नमेंट बेनिफिट should be reached to 100% beneficiary
तामाने जो धरा इंदिरा आवास हला जो माने पाइबार योग्य सबु लोक को इंदिरा आवास दिया जिवो और तमरा सपोज आमे कहले प्रधानमंत्री किसान योजना तो जो माने पाइबार योग्य सबु लोक को दिया जिवो गोटे लोक को भी छड़ा जिवो नाही सो 100% सैचुरेशन इन ऑल द गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो जो गुडा भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव आनी ची तो 100% लोक पाखे दैट शुड बी रीच ओके ना इंडिया डेवलप ओके विकसित भारत तो आमे कहले हमर कोन होची ना 2047 रे तो हमर गोटे डेवलप नेशन हबो किंतु ए जो विकसित भारत प्रोग्राम रो गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव गुडा को इट शुड रीच टू द टारगेटेड बेनिफिशियरीज 100% ओके तो जो माने टारगेटेड बेनिफिशियरी अछंती समस्त को पाखरे जाई कि निहाती पहुंचबा दरकार ओके 83 इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू माने कोन इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू एटा पड़ी थिला लास्ट ईयर 2023 रो क्वेश्चन प्रीलिम क्वेश्चन थिला ओके 2023 रो प्रीलिम क्वेश्चन थिला एटा ओके तो आंसर ए हे जिवो ओके आंसर ए हे जिवो कोन हबो ना पावर ऑफ द जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लॉ तयारी करबो की पार्लियामेंट लेजिस्लेचर माने लॉ तयारी करिवे किंबा गोटे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमरो कैबिनेट नै के आसला तो जो ऑर्डर टा नै के आसला किंबा जो लॉ टा तयारी हैला वेदर इट इज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री भितर अछि ना नाही ताकू चेक करिवो इफ इट इज नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री इफ इट इज वायोलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेटा को कोन करिवो नल एंड वॉइड कर दबो तेनु इट इज द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो आंसर कोन हिजबो ए हिजबो ए जो जुडिशियल रिव्यू टा हमर केत नंबर आर्टिकल ले मेंशन अछि फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल नंबर 13 कोन वेरी गुड जो माने ओके तो फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल नंबर 13 टा होजी से जे लॉ तो तमे जदी एनी लॉ मेड बाय द स्टेट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट इट विल बिकम नल एंड वॉइड जदी ये चेक करिबो इट इज नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री तो एटा को नल एंड वॉइड करदो तो आंसर कोन हबो ना हमरो ए हिजबो हमरो करेक्ट आंसर ओके सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84 ओके यूएन ऊपर हमरो क्वेश्चन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग the UN General Assembly can grant observer status to the non-member states. Intergovernmental organization can seek observer status in UN General Assembly. Permanent observer in the UN General Assembly can maintain a mission in the headquarters. तो कोड हमरो स्टेटमेंट हमरो ठीक अछि का हबो तीनटा हमरो ठीक अछि जदी तमे यूएन जनरल असेंबली रो जदी तमे जड़े नॉन मेंबर स्टेट ताको ऑब्जर्वर स्टेटस रे हम रखि परिबे तमे मेंबर नो बट यू कैन एज ए ऑब्जर्वर हिसाब रे पार्टिसिपेट करि परिबो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली और परमानेंट ऑब्जर्वर जो माने तो से माने तीनटा का हमर स्टेटमेंट ठीक अछि ओके आ भितरु इंडिया कहारो मेंबर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया कहारो मेंबर ओके इंडिया तीनटा जकर मेंबर ओके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ओपीएससी रे पढ़िथिला ए क्वेश्चन एशियन एआईआईबी आर हेडक्वार्टर कोठी एआईआईबी एटा गोटे बैंक हमरो तो तमर कोठी चाइना रे अछि शंघाई ना बेजिंग एआईआईबी तमरा ओपीएससी रे क्वेश्चन पढ़िथिला प्रीवियस ईयर एआईआईबी रो हेडक्वार्टर कोठी आ गोटे पढ़िथिला एनडीबी रो हेडक्वार्टर कोठी न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक हमें ऑलरेडी क्लास रे कवर करथिले तो आर मन रखिबो
बेजिंग चाइना ओके आउ एनडीबी रो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक रहला एनडीबी रो हमरा कोठी शंघाई चाइना ओके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक रे हाईएस्ट शेयर कार अछि चाइना रो ओके मन रखिबा चाइना रो हाईएस्ट एनडीबी रे भी हाईएस्ट शेयर कार अछि ना चाइना रो ओके आउ एटा भी गोटे क्वेश्चन पडितला ए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक ता केबे आसिला गोटे डिक्लेरेशन हेतला ब्रिक्स रो गोटे डिक्लेरेशन हेतला 2014 रे ओ डिक्लेरेशन ब्राजील रे हेतला एटा 2014 रे फोर्टालिजा डिक्लेरेशन एनीवन रिमेंबर फोर्टालिजा डिक्लेरेशन यूपीएससी प्रीलिम रा क्वेश्चन थिला फोर्टालिजा डिक्लेरेशन 2014 रे हमरा आसिला फोर्टालिजा डिक्लेरेशन रे हमरा एटा आसितला ओके ओमास रे भी पढितला ई क्वेश्चन यस ओके फोर्टालिजा डिक्लेरेशन हमरा आसित जो एटा हमरा ओके तापर हमरा होची एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एटा गला एआईबी बेजिंग चाइना मिसाइल कंट्रोल एमटीसीआर इंडिया आर ओटे इंडिया होची तमरो एमटीसीआर आ ओटे हमर हला कोन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एमटीसीआर आ ओटे हला हमर कोन वासेनर ग्रुप ओके ए तीनटा का ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वासेनर ग्रुप और मिसाइल कंट्रोल एजेंट ओके तो एमटीसीआर एगुडा का हमरा होची कोन ना तमरो इंडिया होची मेंबर संघाई कोऑपरेशन रे इंडिया होची ओटे मेंबर इंडिया और पाकिस्तान दी जन जाक होची मेंबर तीनटा का हमरा होची कोन ना तमरो इंडिया होची मेंबर सो 86 रे हमें कोन करबा नेक्स्ट क्लास रे बाकी क्वेश्चन करबा ओके सो नेक्स्ट क्लास रे करबा एमटीसीआर रो जाना नहीं ओके चेक करके कहियो तुम हां ओमरस रिजल्ट इज आउट हमर भी बहुत पिला पाई छनी हम छाडू छी ओके जो माने पाई छंती ओके थैंक यू एवरीवन